I hope you're learning awesome. Welcome back to another exciting video. Let me set the context for today's video. So imagine a multiplayer game where multiple players join. Their scores is updating over time, and all those things are just rendering onto the live leaderboard. Cool. So the problem here is not like we have to render this data to the UI. That's very straightforward. But the key challenge here is like their state is changing continuously, and we have to push all the updates, the real time updates to the UI. Cool. Like the real time systems on YouTube starts with your SignalR or your Redis or might be with the Kafka like PubSub. But in this video, I just wanna ask you a one simpler question. Like, what is the minimum architecture we needed to build this real time multiplayer leaderboard? So in this video, we'll build this system step by step using the fundamentals, hosted services, in-memory state, and your WebSockets. So without any further ado, let me start with the video. Let me quickly share my screen and see you all there. Cool. So just allow me a moment. Let me just check few things here. Screen working. Cool. Hello, hey, what's up? I think I am audible. Screen is visible. I think I am audible. Screen is visible. Cool. So what we'll do here, we have to create one here web and not. We'll simply go with web API. And here what we can do, we can create one leaderboard dot live, or simply we'll give live leaderboard. Cool. All set. Let me quickly click on create. Perfect. So this is my project, and we'll go here. It's loading currently. Cool, no worries. It's loaded here, and let me go to, I think it's readable. Yeah, भाई फैंस इतनी देर चल रहा है ना सिस्टम के. I don't need this. एक second. Where is this? I can move this a little bit here, or I can take my keyboard a little bit close to me. Oh, I'm cool. Now what do we really need here? We don't need this endpoint, and rest of the things we can, although we don't need the OpenAPI support here. Cool. So here we have 4 states. Cool. So let's first talk about the architecture here. So for the architecture, what we gonna do, so we have 4 states here, or I would say the components. The very first is your UI. So UI will build in the React. We will build, that means I'm not writing the UI. I'll take help from GPT because I don't like to write the code of the UI, although I write sometime in office, but I don't like to write the UI code, so I'll not write for this definitely for sure, but we'll take the help from GPT and we'll take the UI code from there, and it will be in React. And the second component or the state, I would say, will have the our लाइव जो आपका लीडर बोर्ड है उसकी स्टेट होगी एक, ठीक है, और उस स्टेट में हम क्या क्या रखने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग टुगेदर. कूल. Let's talk about what we'll keep there. Oh, so very first we will have models, and inside this model, the very first will have one player scores. Cool.
So what we'll do, we'll have, so in this model very first we'll create one class with the name of player score. Cool. And here we will have three properties. uh, we'll use public. We can take that as a player id. We don't need user id, we just need player name. And I think I can give the null as the default value for this as well. And the third field, I'm getting errors here. Alright, and here we need public int score. Cool. Now we were talking about the state, our like the second component. So for that, what we will do, we'll create one state here. Now what name we can give to this state? We can give public, not public, that would be a class name. I think we can give a name like leaderboard state, because although we are just building leaderboard, so I can give this as leaderboard state, or let give it as a store. Now what there's a typo. BOARD. Cool. So here we will have a couple of things, like we'll very first we need one lock here. Lock is for handling the concurrency. And the next we need one dictionary. Cool. And here we need couple of methods, and those would be our state, like get what get players snapshot. Just I'm calling it as a snapshot. Cool. And next add player, and the next could be our update score. Cool. So dictionary would be our players bag, players, or we can say the bag. When we'll call the get player snapshot, we'll return this whatever inside our, it's our in memory state. Here we are not using db, I don't think so at this moment we require any db, but we'll cover this in the coming section, like why we do not need db for this. Although you'll say हमें db नहीं चाहिए इसके लिए, क्यों, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? We'll answer all these questions, but have some patience and let's be with the flow. Cool. So we'll do one by one. So very first we have to define the lock. So we'll go private read only. We can simply create one lock, and then we need dictionary. We can say private read only. We can create dictionary. Here we have key value, will play score and player scores. Dictionary done. Now we need one get player snapshot, and here what we have to do, we have to return the I read only collection, or let me return the list of player scores. And method name we can give like get leaderboard scores, or we can call it as snapshot as well. So what we'll do, we'll use the lock here, and what we will do, we will for sure return
will return player score dot values. But now what we want on leaderboard, the which user or the player has the highest score, they just populated on the top. So here we'll use dot descending, order by descending, and here we will say 1 lambda p tends to p dot score, and then we will select here p tends to new player score. इतनी रात को कौन नोटिफिकेशन भाई. Cool. And our player id would be p dot player id, and then I have player name, that would be your p dot player name. Then I guess score would be your p dot score, and here we can just cool. This is our simple get leaderboard scores. We used lock, and inside that we are returning the values descending order, in a descending order. Cool, this is done. And the next, oh just hold on यार, मैंने recording start करी या नहीं करी? Why I am so confused here. Yeah, it's recording. It's recording. I forgot like whether I just clicked on the start button or not. Yeah, I clicked. It's recording. Cool. So next we need add player. So we will create public, and here we won't return anything for this, and we'll simply say add player, and we'll get the player name, and probably we just need the id, because when player is joining the initial score will be 0, so default we can give that, but we need the id. Although id also we can just define here like random, we can use the grid here. Sure, we'll use the lock here, and we will only like we have to add the player. If it is not there, only then we will add player. So what we will do, we'll use player scores of player id is equal to new player score, and the value would be player id, player name, and score will give it as 0 for default. And I think that's all we need as of now for adding a player. We are getting id, we have name, and we are just checking. If it is not, then add this. Alright, and then we need one update score public. We'll call void, will update player score, will pass the id. We don't need name here. I think id is sufficient because it's unique. And for sure we need lock. We will check. अरे रुक जाओ. अरे if player exists, only then we'll update the score,
and instead of score let me take that as a delta. So if this then what we will do, I'll use player score dot try get value. I'll pass the player ID and I'll take the score, and I can simply player score plus is equal to delta. What it is suggesting and what it is reduce nesting. Also what we can do, I think we can just take this from here and we'll, rather than just parsing this, we can do this. Perfect. So we are checking if our player exists in the dictionary. We'll call that out and we'll update their score. We are doing inside lock. I think that's enough for this. And what it is saying, okay, he's saying instead of using the, just use lock. No worries, we'll go with that. All right, so I think we are good with this. So till here we have done with the first component, which is our state. So we are using in memory. I can remove these comments or just keep it for the reference. Cool. So we have like this is our state where we have all the players and we are returning their scores. We are just adding players. We are just updating player score. Cool. So far so good. Cool. So now we have this. Our state is ready. So state is just for user activities. So now we have, so let me add this into our IOC. What we'll do, not here, we'll add here services to the container. Builder dot services dot just cool. So uh, we'll use add singleton here, and here we will see our name is leaderboard. Leaderboard state store. Perfect. Cool. So the second or the third component is our game engine. Now this is core, this is very important. Game engine is not the like your user activities, it's basically the core, how your game performs. User activities are like adding user, updating user score, but and here game engine will create with your background service. And one more thing, if you don't know anything about background service or the hosted services, what they are, how they works, so it's the time, just go and watch the video I have created on hosted service and the background service. Yeah, I already have a video, it's right now popping on the screen. Go and check it out, then come back to this. I was planning this video for so long, but there are couple of things in the video, like your I would say one of the background or the hosted service which I didn't cover earlier. So I covered those like prerequisites or the small videos. Now I am just bringing this complete video where all the small dots are connecting, like your background services or like your IOC and DIs, all the things. So if you are not sure about those, I would recommend just go and check those videos first and then come back to this and watch. But I believe if you are watching or just building this live leaderboard, so I think you have some sort of experience
how DI works, what are background services, what are hosted services, why we need that. But it's the simplest architecture like we need to build the live leaderboard. Cool. Although for the facilitating or the production scale level architectures, you have to go with those. But if we start with that, so how we'll understand the core, like how system works in the abstraction behind the scenes. So that's the core. Cool. So this is the time we are building the game engine, its core heart. Cool. So very first, what we will do, we'll create one services. Here we'll keep all our services. So we'll give it the name as leader board score engine, and this will implement your background service. So we have to, so it's giving error. Yeah, we have to override this execute async method we have in this class. Yup, this abstract method we have to override. So what we will do, we'll simply say public override execute async, and we'll complete this. But here also we need couple of things. The very first is store. Cool. We can use the logger, but probably I won't write the code for logger that you can add. That I'll just keep as a to do here. So you will write the code for logger. I think इतना तो कर सकते हो. Store हो गया, logger हो गया. Then we need one random class यार. We'll generate some random IDs and the scores for the user यार. कितने बेशरम हो भाई. Cool. For the store, should I define here, or I can use the, I'll go with the primary constructor concept. We have a leaderboard, not score engine. Yeah, leaderboard state store, and we'll simply call this as leaderboard. Our store is done. Logger you will write. And for the rand, we can simply create rand here. We'll take random rand. Okay. Now here what we'll do in the execute async, the very first we need to like seed players, and for that let me create one method seed players. We'll create this. Is this giving me the suggestion? Not. Yeah, here we have generate code. Ha. Ho. No. अरे लिख लेंगे यार, कुछ नहीं करना इसके लिए. वो देखो खुद ही वो सजेशन दे रहा है हमें. बट यहाँ पे हम करेंगे क्या, we'll simply say players, and here we can I think create new array we can create, and here we can just pass few fields like although ultimately we'll call this method like inside store we have add player, which will take two parameter. One is your string player id, another is your player name. So I'm assuming initially we have our id p1, and player name we can give Alice, and Bob, Charlie, David. अरे बहुत है. Cool.
Now we have to use the one for each loop, the players we have, and what we will do, we will call our leaderboard dot add player, and here we'll parse player dot. Okay, so instead of taking the player, we will take the id comma watch name, and I think here we can simply parse the id comma name. This will work. Am I missing the syntax? No, I think this will work. We are just taking all those, and yeah, this will work. So this is just for seeding the players. Now I think do we need anything else here? No. Loggers आप लोग लिख लेना यार, मैं नहीं लिख रहा loggers. Cool. Now here we need while expression is not, is cancellation requested. What you have to do, you have to update player scores, and we have to create this method. And also here I wanna use the task dot delay from time span from second, and this is just need 2 seconds. Why should I mark this sync? Cool. And update player scores that I need to create, and here we need, what we have to do, we need to generate some, let me call this as player id. And what we can do here, we can simply use next, and from 1 to 5 I think is enough, because although we have 4 players, so we'll use only 5 IDs. And we need delta as well here. So for delta, what we can do, we can take next, and delta we can take like we just want to update, or we will just put some random number into 1 to 10, and this will happen in the real time. So although we have our leaderboard here, update player score will parse the delta and our player id. So I think that's all for the updating player scores. But how this is working, like this is I think the simplest game engine you will see ever, although I'm not writing the actual code of game engine, that would be written by your game developers. But yeah, for the understanding you can just think this as the simplest game engine. कॉन्सेप्ट समझना है यार हमें, ठीक है. तो player update player scores is cool, and this is running until the application is stopped. We are just calling this, and if you don't getting this, I would say just go and check my video on background services once. Okay, you will get all these, and this is just for the simulation, like we are adding. Cool. And what we can also add this to our pipeline IOC container, builder dot services dot add hosted services,
and here we can say we have leaderboard, our score engine. Now what left? Now we are left with the, let me write here, we left with the WebSockets and connection endpoint. Now we, oh, the main जहाँ पे आपको दिखेगा React UI. Now we are left with these three components. कितना टाइम हो रहा है? No, it's running a long video. So let me just fill this with the water. I'll be back in a second, in a 10 seconds, or maybe in a minute. Just take a small break. Yo, I'm back. Woo hoo hoo hoo. Cool. So now the next layer is our WebSocket. Perfect. But I think we can just simply test this, although we haven't added anything yet. But I think our score engine is ready and it should. I'm getting services not be able to constructed. System dot activate singleton implementation type. Ooh. I think we need to declare this with here because we are not getting this as a DI. We are just instantiating this. I think this should work now. Yeah, it's working. अभी हमने कोई लॉगर ऐड नहीं किया है तो हमें कैसे पता चलेगा? Cool, मतलब एप्लीकेशन वर्क कर रही है, which means we are not carrying errors or exceptions with us yet. Cool, so what we will do now, will add our next layer, which is WebSockets. Now WebSockets here are not like generating anything. It is just taking your scores and broadcasting to all the clients. Cool, so let me create one WebSockets directory. Also, if you don't know about WebSockets, I would say go and check it out on WebSockets. I have video. मेरे को याद आ रहा है मैंने बनाई है WebSockets पे वीडियो. मैं ढूंढ के यहाँ पे अटैच कर दूंगा. आई थिंक पॉपअप हो रहा होगा और नीचे लिंक भी ऐड कर दूंगा. Although that's a very generic and understandable high level video on WebSockets. Probably मैंने शायद उसमें कोड नहीं किया है, बट WebSockets क्या है, क्यों चाहिए, वो सब वहाँ कवर कर रखा है. एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको पता है WebSockets क्या है, वो कैसे काम करती हैं. सो आई थिंक दैट मच यू नो अबाउट WebSockets. हाँ, तो WebSockets में हम यहाँ पे दो चीज़ें रखेंगे. एक हमारा WebSockets का कनेक्शन मैनेजर रखेंगे और एक हमारा हैंडलर रखेंगे जो कि हमारा होगा लीडरबोर्ड WebSockets हैंडलर. कूल. तो सबसे पहले हम WebSocket कनेक्शन मैनेजर पे ध्यान देते हैं. कूल. सो आई विल गिव द नेम एज WebSocket कनेक्शन मैनेजर. कूल. अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी. अब यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए? आई थिंक हमें यहाँ पे
क्या एक्टिविटीज़ चाहिए? सबसे पहले तो मेरे को ऐड करनी है सॉकेट, मेरे को रिमूव करनी है सॉकेट, रिमूव सॉकेट्स, और मेरे को एंड मैक्स होगा कि गेट ऑल सॉकेट्स चाहिए। अब मेरे को ऐड करने के लिए सबसे पहले तो बैग चाहिए एक। कहाँ ऐड करूँगा मैं? प्राइवेट रीड ओनली। नाउ दिस टाइम I'll go with the concurrent dictionary and key would be my string. I can use WebSockets here. I can give this as अरे भैया सॉकेट्स ये एरर क्यों दे रहा है? यहाँ पे तो चलो नाम में गलती करी है हमने। वेब सॉकेट कनेक्शन मैनेजर, system.net.websockets.websocket using system परफेक्ट। सो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे ऐड के अंदर पब्लिक वॉइड ऐड सॉकेट। अब यहाँ पे हमें एक कनेक्शन आईडी चाहिए और एक सॉकेट चाहिए। लोगर वगैरह आप लोग ऐड कर लेना, और बस मुझे इसमें ऐड करनी है। ये हम करेंगे इस कनेक्शन आईडी पे सॉकेट ऐड कर दो। ऐसे ही रिमूव के लिए कर लेंगे पब्लिक वॉइड रिमूव सॉकेट, कनेक्शन आईडी उठाओ वहाँ से, ट्राई टू रिमूव, और ये डिफ़ॉल्ट पास कर दो उसे। गेट ऑल के लिए मैं ले लूँगा पब्लिक आई रीड ओनली कलेक्शन वेब सॉकेट। यहाँ पे हम कर देंगे गेट ऑल सॉकेट्स। सिंपल है, सो फार सो गुड, इट्स ऑल क्लीन। ऐड सॉकेट्स आ गया, रिमूव हो गया, गेट भी हो गए सारे सॉकेट्स। सो अब हमें चाहिए लीडर बोर्ड वेब सॉकेट। अभी मैं कंट्रोल दबा देता भाई। हैंडलर टाइपो है क्या फिर से? लीडर बोर्ड वेब टी मिसिंग है ब्रदर, टी 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 टी। Cool. So now we have our this leaderboard WebSocket handler as well. Now here we need couple of things. We need our store, the state we created, and we need one connection manager as well of our WebSocket. Cool. This perfect. And here also we'll create, okay, let me create things side by side. Connection manager, I can simply take now these from the primary constructor. स्टोर का नाम बताइए अपने। स्टोर का नाम है हमारे लीडर बोर्ड स्टोर, लीडर बोर्ड,
and one we need web socket connection manager. And what we will do, we will create one handle sync here. What it will do, it will be called by our rest means our WebSocket connection. Like when we'll send a request to connect with a socket, and that would be come through your API and will parse the WebSocket there. So cool. Here what we will do here. Perfect. So here we will use one public async task. So it will public async task. I'll give it as handle async, and here we need one context, and I need WebSocket as well. And what we need here, the very first I need to the very first we need one connection ID, and that I can just generate here, and I can create one connection as well. For that I can simply do connection manager dot add socket. It will take my connection ID and WebSocket. Now I have to send, like if you remember, we created this get leaderboard scores. So what we will do, will like whoever is connected will send the initial snapshot. I'm just saying here, so I'll say send initial snapshot here, and what this will do, will create one private void send, although we should await this. Private async task, and here what we will do for that, we need our data. Also instead of initial, let me give it as async, because we'll call this as send snapshot async. And what it will take, WebSocket only, and here we will receive one WebSocket, and we will simply get the leaderboard from our store. What is leaderboard? There was one get leaderboard scores. Now we need to serialize this data, and for that we can say JSON serializer dot serialize leaderboard. So we can simply say where buffer is equal to encoding UTF-8 dot JSON. Now we can simply send our, what we are sending, one buffer, and we are sending our text message. What we are sending as true. Let me check, confirm once. Cancellation token, no. End of message, yeah.
So yeah, we have to send this like WebSocket dot send async, so whoever will join will just push all the data we have. Although here we need the actual state management, how the state will be managed based on the event occur. So that will add, but first we have to complete this. Cool. Now our send snapshot async, it's cool, working good. It's cool. So we are good with our this send snapshot async. Now we need one more here, which is your keep connection alive. So for that we can create one method. I would say await. No, we'll say what name. We can give something like listen until disconnected connected async, and here we need to pass the connection ID and the WebSocket. And for this, what I think we can simply array not array, bro. Listen until will take this argument here, and here we have to use the try. Here we have to use the try catch. Will not use the catch. We'll go with the finally here, and will not throw anything here. So inside try one, what we'll do, but before that let me create one buffer. We will give the size as 1024 into 4. Now what we have to do here, we can simply run a loop here, like the socket I am getting. या जब तक मेरी जो वेब सॉकेट आई है उसकी स्टेट ओपन है, तो आप एक काम करो, एक रिज़ल्ट ले। अब ये क्या होगा, रिसीव सिंक करो एक बफर और उसको कैंसिलेशन टोकन दे दो, और चेक कर लो कि अगर जो मेरी उसकी वेब सॉकेट क्लोज हो रही है तो आप कुछ मत करो, सिंपल ब्रेक कर दो मेरे लिए। तो मुझे यहाँ पे क्लोज भी करना पड़ेगा, तो मेरा यहाँ पे कनेक्शन मैनेजर है, उसमें से रिमूव कर देता हूँ और मैं अवेट करता हूँ क्लोज अ सिंक। यहाँ पे मैं जो मेरा डिस्क्रिप्शन है ये मैं दे देता हूँ, एम्प्टी क्यों देना है यार। यहाँ पे हम कुछ लिख देंगे लाइक कनेक्शन क्लोज्ड, बाय बाय। ओके, कनेक्शन क्लोज्ड हो गया, कूल। नाउ these are the two keys we have covered. like ये जो हैंडलर है, ये तुम्हें लग रहा होगा भाई बहुत मतलब खतरनाक चीज़ है, कुछ टिपिकल बिल्ड हो रही है, तो बट चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। हैंडलर्स जो होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं, मतलब और वैसे इतना कुछ मतलब कुछ टिपिकल नहीं किया हमने इसमें। कौन है भाई? ठीक है, हाँ इतना कुछ टिपिकल नहीं है, मैं यही बोल रहा हूँ। बट देखो हमने सेंड स्नैपशॉट सिंक बनाया, कितना सिंपल मेथड था क्या नहीं? फिर हमने अभी उसको अलाइव रखने के लिए एक बहुत बहुत मिनिमल कोड लिखा है, ज़्यादा नहीं लिखा है। आई नो, मतलब स्क्रैच से चीज़ें लिखना भाई मेरे से पूछ के देखो कि मैं लिख रहा हूँ या, बट मज़ा आ रहा है भाई मेरे को सच में। मैं मतलब कि
गेम बनाने में मज़ा नहीं आता मुझे, बट ऐसी जो थोड़ी सी होती है ना टिपिकल चीज़ें करने में मुझे थोड़ा सा मज़ा आता है, ज़्यादा नहीं कहूँ, थोड़ा तो आता है। ठीक है, सो अभी हमारा क्या बचा है इसके बाद? ओके, cool. So now we have left here with the one thing. So now we have to add the broadcast sync as well, because इनिशियल स्नैपशॉट भेज दिया, अलाइव रख दिया, बट हमें ब्रॉडकास्ट भी तो करना है ना उसे। तो ब्रॉडकास्ट असिंक को हम ऐसे हैंडल नहीं करेंगे। अब उसके लिए आप सोच रहे होगे कि पहले ब्रॉडकास्ट देखते हैं क्या है, फिर उसको कैसे हैंडल करना है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब ब्रॉडकास्ट जो मेरा चलेगा उसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ प्राइवेट, असिंक टास्क ब्रॉडकास्ट असिंक। ये हमारा लेगा एक वेब सॉकेट। मैं बताता हूँ, इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो आपने एक यूज़र को भेजा है पहले तो इसी को ही ले लेते हैं हम। ठीक है, ऑल दो ड्राई नहीं करना है, बट ठीक है अभी के लिए जस्ट पहले समझ लेते हैं है क्या। एक के लिए ये चल रहा था, अब मैं यहाँ पे एक फॉर ईच लूप लगाता हूँ। कलेक्शन क्या है मेरा? कनेक्शन मैनेजर। यहाँ पे मैंने कनेक्शन मैनेजर लिया था, इसमें मेरे पास एक मेथड था गेट ऑल सॉकेट्स। ठीक है, वेर मैं इसको सॉकेट नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा जो मेरी सॉकेट की स्टेट है, अगर वो मेरी ओपन है तो मुझे भेज दो यार उसे। इसको यहाँ से पिक करो और यहाँ सेंड कर दो, बस। और क्या होगा ब्रॉडकास्ट में, क्या लगता है आपको? सबको भेजना है ना। अब यार इसको ऑप्टिमाइज वगैरह वो सब करेंगे, पहले एक्सपेक्टेशन जो है उसको मीट कर लें हम। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रॉडकास्ट का, बट हम ब्रॉडकास्ट को यहाँ कॉल नहीं करेंगे। अब इसमें जो हमारा मेन बचा है अभी, अब इसमें दो चीज़ें मेन बची हैं हमारी। सबसे पहली तो हमें एक रेस्ट एंड पॉइंट बनाना है जहाँ पे हम वेब सॉकेट का कनेक्शन रिसीव करेंगे, कनेक्शन रिक्वेस्ट उसको यूज़ करेंगे। और सबसे जो मैं कहूँगा टिपिकल जो अभी बचा है ना, वो बचा है आपका स्टेट मैनेजमेंट। यस, आपकी स्टेट चेंज हो रही है, जैसे स्टेट अपडेट हो रही है, लाइक यूज़र का स्कोर अपडेट कर रहे थे ना हम स्टोर के अंदर यहाँ पे। तो जब मेरे यूज़र अपडेट हो रहा है उसका स्कोर, तो मुझे एक इवेंट सेंड करना है ना। एक इवेंट अगर हुआ, ठीक है, ऐड हुआ तो भी इवेंट अगर हुआ, एक नया यूज़र आ गया। अब इन चीज़ों का मुझे एक अपडेट भेजना है, अब उसके लिए मुझे एक स्टेट मैनेज करनी है यहाँ पे। तो बस अब ये दो चीज़ें मेन बची हैं। आई नो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, बट देखते हैं इसको, मतलब एडिटिंग के टाइम अगर स्प्लिट करके दो वीडियोस में कन्वर्ट हो जाए। बट जस्ट अब बहुत सिंपल काम बचा है, जस्ट हमें एक स्टेट मैनेजमेंट करना है और एक हमें रेस्ट एंड पॉइंट डालना है वेब सॉकेट के लिए। देन आई थिंक वी विल गुड टू गो। ठीक है, देखते हैं, होल्ड ऑन। तो अभी के लिए सबसे पहले हम करते हैं, सबसे पहले रेस्ट एंड पॉइंट डालें। पहले रेस्ट एंड पॉइंट डाल के चेक तो कर लें चीज़ें चल भी रही हैं या नहीं। ठीक है, तो रेस्ट एंड पॉइंट मिनिमल एपीआई से ही बनाएंगे यहाँ पे, वहाँ कहीं नहीं, अभी हम कंट्रोलर नहीं लिख रहे उसके लिए। तो हम यहाँ पे सीधा मिनिमल एपीआई बनाएंगे ऐप डॉट मैप, और यहाँ पे हम देंगे वेब सॉकेट लीडर बोर्ड इसको दे सकते हैं, और HTTP कंटेक्स्ट। सबसे पहले तो इसको असिंक बना लेंगे और यहाँ पे एक हम कंटेक्स्ट पास करेंगे। कूल, अब मैं यहाँ चेक कर लूँगा जो मेरा, अगर वो वेब सॉकेट रिक्वेस्ट, सबसे पहले चेक कर लो कि नॉट, नेगेशन चेक कर लेता हूँ, अगर वो है ही नहीं तो सीधा 400 सेट करो और रिटर्न कर दो यहीं से। तो यहाँ पे मैं बना लूँगा एक सॉकेट और ये एक्सेप्टेड, और एक मेरे को चाहिए अब यहाँ पे हैंडलर।
रिक्वेस्टेड सर्विस डॉट गेट सर्विस, इसको मैं हैंडलर बोलूँगा, ठीक है। और ये गेट सर्विस नहीं चाहिए मुझे, मेरे पास यहाँ पे होता है एक गेट रिक्वायर्ड सर्विस, ठीक है। और रिक्वायर्ड सर्विस ले ली हमने यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है अवेट हैंडलर डॉट, यहाँ पे हमने कौन सी सर्विस ली है इसने, अरे स्टोर नहीं चाहिए ब्रो, हमें चाहिए यहाँ पे वेब सॉकेट नहीं, लीडर बोर्ड वेब सॉकेट हैंडलर चाहिए ना, क्योंकि उसके अंदर हमने एक मेथड डिफाइन किया था हैंडलर डॉट हैंडल सिंक, जो कि आपके दो पैरामीटर लेता है। पहला कंटेक्स्ट लेता है जो कि आपका HTTP होता है, तो पहला ही आपका लेता है HTTP कंटेक्स्ट जो कि मेरा आ रहा है, दूसरा लेता है वेब सॉकेट जो कि ये मेरी सॉकेट आ रही है। और तो यहाँ पे हम सिंपल रिटर्न करवाएंगे जो कि मेरा हैंडलर डॉट हैंडल सिंक ये हमने बनाया था। पहला इसे कंटेक्स्ट चाहिए, दूसरा इसको सॉकेट चाहिए। और अभी क्या बचा है यहाँ पे, मैप पे कह रहा है कैन नॉट रिजॉल्व मेथड मैप lambda expression, oh I see, what else, और क्या बचा है, रिटर्न टाइप इज void, ओ इसको सिंपल अवेट करते हैं ना, फिर रिटर्न टाइप void देन सिंपल अवेट दिस। और यहाँ पे अब हम करेंगे सिंपल अवेट, और यहाँ पे हमारे पास हैंडल सिंक है, ये लेता है मेरा कंटेक्स्ट, और दूसरा मैंने सॉकेट बना लिया, परफेक्ट। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे करना है मेरे को सबसे पहले डिफाइन करना है कि आप यूज़ करो वेब सॉकेट्स को। अरे मैंने शायद इनको वेब सॉकेट्स के जो मेरे हैंडलर और कनेक्शन है इनको भी यहाँ पे ऐड नहीं किया है, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ फटाफट। इन सबको मैं एज ए सिंगलटन ऐड करूँगा। हाँ, सबसे पहले ऐड करेंगे हम अपने कनेक्शन मैनेजर को, तो इसको दे देते हैं हम वेब, ओ भाई आया था यहाँ कहीं, आया था ना, ये रहा मेरा कनेक्शन मैनेजर। और एक मेरे को देना है लीडर बोर्ड सॉकेट हैंडलर हो। तो एक बार इसको टेस्ट कर लें, हमारा ऑल्दो अभी स्टेट मैनेजमेंट बाकी है, लेट्स सी सब कुछ चल रहा है। ऑल्दो मेरा वेब सॉकेट पे कनेक्शन तो बनना चाहिए इससे, ये चल रहा है 5167 पोर्ट नंबर। लेट मी ओपन दी पोस्टमैन एंड फिंगर्स क्रोस्ड, देखते हैं क्या होता है। Cool, so postman is here, so we'll create one new tab, or नहीं, we'll create new, we'll go to WebSocket एंड यहाँ पे हमें चाहिए एक WebSocket रिक्वेस्ट। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे WS लोकल होस्ट, कौन से पोर्ट पे चल रहा था हमारी एप्लीकेशन,
इसको हम यहाँ पे सेट करते हैं, इसके बगल में हम खोलते हैं हमारा पोस्टमैन। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन चल रही है 5167। देखते हैं कि हमारा वेब सॉकेट सही से कॉन्फ़िगर हुआ भी है या नहीं। So let me connect here. So as I am connecting, I am getting the score is 35, and if you are observing, we are just only getting the one message, which means it is not broadcasting the messages. So broadcasting will happen like we have to handle the event or the states here. Just allow me a moment. What I meant by that, अभी क्या हो रहा है कि यूज़र ऐड हो रहा है या उसका स्कोर अपडेट हो रहा है, उस पर हम कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो सारी स्टेट्स हमें यहाँ पे मेंटेन करनी है। कूल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फटाफट से इसको इंजन में नहीं, स्टोर में जाएंगे हम, और स्टोर में यहाँ पे हम बनाएंगे एक प्राइवेट इवेंट। यहाँ पे मैं एक एक्शन, इसको स्टेट चेंज्ड नेम दे देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं फटाफट से नहीं, कंट्रोल, यहाँ पे मैं फटाफट से एक प्राइवेट वॉइड नोटिफाई स्टेट चेंज्ड डॉट इनवॉक कॉल करो यहाँ। ठीक है, अब ये मेरे को दो जगह करना है। एक मेरा जहाँ पे प्लेयर ऐड हो रहा है, यहाँ पे मुझे करना है नोटिफाई कूल, और एक मुझे करना है अपडेट के बाद, अपडेट नहीं करना, नोटिफाई स्टेट चेंज्ड करना है। कूल, ये हमने कर लिया। अब जब भी मेरी स्टेट चेंज होगी मुझे ब्रॉडकास्ट भी करना है उस मोमेंट पे। ऑल्दो अभी अगर आपने देखा होगा कि हमने ब्रॉडकास्ट को कहीं भी यूज़ नहीं किया है अभी तक। ओके, अब हम क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट हमारा एक प्राइवेट मेथड है। यहाँ पे हमें इसका एक कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा मेरे को, पब्लिक WebSocket हैंडलर। अरे, और यहाँ पे मेरे को चाहिए होगा जो मेरा लीडर बोर्ड आ रहा है। अरे यार, अब मुझे ये प्राइमरी कंस्ट्रक्टर हटाना पड़ेगा यहाँ से। पहले मैं एक काम करता हूँ, फिर इसको ले लेते हैं और यहाँ पे बना लेते हैं हम स्टोर एंड कनेक्शन मैनेजर। अरे भाई क्या कर रहे हो, बिल्ड नहीं करना अभी। प्राइवेट ट्री, अरे यार मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकता था वहाँ पे, अब नहीं बना रहा मैं। अब तो हो गया मेरा। थैंक गॉड ये मुझे दे रहा है यहाँ पे। लीडर बोर्ड ले लो, वेबसॉकेट मैनेजर ले लो, और यहाँ पे मुझे करना था लीडर बोर्ड नोट यहाँ पे। अरे यार, स्टेट चेंज को पब्लिक करना था ना मुझे, तभी तो मैं इसको वहाँ पे एक्सेस कर पाऊँगा मेरी स्टेट चेंज्ड को। और यहाँ पे जो मेरी स्टेट चेंज्ड है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ऑन लीडर बोर्ड स्टेट चेंज्ड, और ये मेरे को एक मेथड यहाँ बनाना पड़ेगा। उसको क्यों एरर दे रहा है ये, प्राइवेट वॉइड
ऑन लीडर बोर्ड स्टेट चेंज्ड, और यहाँ पे हम कॉल कर देंगे हमारा ब्रॉडकास्ट सिंक मेथड है। पैरामीटर कैसे ले सकता है ये मेथड? मैं अभी के लिए पहले ये क्यों फट रहा है भैया, इसे देखो था इवेंट्स, ये क्यों पैरामीटर ले रहा है भाई, इसमें पैरामीटर नहीं आने चाहिए। आई सी, एक और दिक्कत कर दी हमने। जबकि ये हमने गलत कर दिया था, हम गलत वेब सॉकेट को पार्स कर रहे थे, वो ब्रॉडकास्ट हमने यूज़ नहीं किया था। ये इस सॉकेट पे जाना चाहिए ना, उस पे नहीं जाना चाहिए। ब्रॉडकास्ट सिंक मेरा कोई पैरामीटर नहीं लेता है ब्रो। नाउ दिस मेक्स सेंस। अवेटेड, अवेट है क्या? तो इसके लिए मैं अवेट यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, टास्क बना देंगे बाद में, अभी पड़ा रहे। अब फिर मैं वहाँ भी चेंज नहीं करूँगा, अभी पड़ा रहे जो भी है। ठीक है, अभी के लिए सो फार सो गुड। एक बार फटाफट इस स्टेट को टेस्ट करें हम। ये चल रहा है ना भाई? इतनी रात के कौन जाग रहे हैं? ये 3 बज रहे हैं रात के, अभी भी लोग स्नैप खेल रहे हैं। चलो एक बार डिबग करके देख लेते हैं फटाफट से। पोस्टमैन कहाँ है? चल रहा है 5167। करे कनेक्ट, करो। हो, ब्रॉडकास्ट मैसेज स्टार्ट हो गया। अब देखो स्टेट चेंज हो रही है। पहले बॉब का 13 था, 13। ओ बॉब का 7 हुआ, बॉब का 15, बॉब का सबसे ज़्यादा होगा आई गेस स्कोर, तभी उसको हमेशा ये टॉप पे दिखा रहा है। ठीक है, और इसमें हमें उतने अच्छे से पता भी नहीं चल रही होंगी चीज़ें, तो हम एक काम करते हैं, यूआई बिल्ड करते हैं इसका फटाफट से। इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, और मैं जीपीटी से इसका यूआई बिल्ड कराता हूँ फटाफट से। ऑल राइट गाइज, तो यूआई बिल्ड हो चुका है इसका। मैं एक बार बैकएंड को अप कर लूँ अपने। ये मैंने बैकएंड को अप कर लिया। एक बार यूआई को भी स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। भाई मैं यूआई बिल्कुल लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो ये कुछ नहीं है, आप देख लेना। बिल्कुल सिंपल हमने एक वेब सॉकेट बनाया और ये टाइप स्क्रिप्ट बना लिया TSX। इसमें एक एरर क्यों आ रहा है? कुछ देखते हैं एक बार रन करके, कुछ फट रहा है क्या? यूआई में मैं हूँ, npm रन डेव होता है आई गेस। ये आया तो है लेकिन डेटा नहीं आ रहा है मेरे पास। डेटा क्यों नहीं आ रहा है? वेब सॉकेट कनेक्शन इज फेल्ड 5096। नहीं यार, हम 5096 पे काम नहीं कर रहे हैं। हमारी जो एप्लीकेशन चल रही है दैट इज रनिंग ऑन। ओ यहाँ भी एरर आया। 5167 is already in use. What's bullshit? How? पहले बैकएंड को अप करके देखेंगे कहाँ चल रहा है।
अरे यार मेरे को कस्टम पोर्ट नहीं, मैं डिस्कनेक्ट कर दिया था ना, मेरे अकॉर्डिंग तो कर दिया था। डीबग मोड में भी सेम एरर आ रही है क्या? नहीं चल रही है क्या? मैं क्या करूँ रे पप्पा। Oh, Shumar, yo. 5167 is already in use. और UI पे क्या यूज़ कर रहे हैं? 5096 5167 कर देते हैं इसे भी। UI पे डेटा पॉपुलेट होना चाहिए, गाना आए या ना आए फिर भी गाना चाहिए। यार मुझे नहीं करना, मुझे यहाँ जाके पोर्ट चेंज करना पड़ेगा। चलो 52 पे चला देते हैं। हाँ चलो 52 पे चलिए। यहाँ जाके हम कर देते हैं इसे 52। और गाइस आर यू रेडी टू सी द मैजिक? अभी तो वेब सॉकेट ही कनेक्ट नहीं हुई है, करे रिफ्रेश। बूम। ये यूनिक की ओके की डिफाइन करनी है वहाँ, पहले इसको मॉनिटर करते हैं बैठ के कि ये चल भी रहा है या नहीं। ठीक है, बॉब का 3341 हो गया, एलिस 20, चार्ली 20, डेविड 17। क्या हो भाई, दोनों क्लैश क्यों कर रहे हो? ओ बॉब भाई सबसे आगे, 51 स्कोर है भाई का। देख रहे हो जादू, रियल टाइम, नो रिफ्रेश नो पुलिंग, चल क्या रहा है ये? Oh, crazy shit, bro. This is your live game leaderboard. Woo, 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 woo. देखो, अगर तुम अब तक इस वीडियो में बने हुए हो, एक लाइक तो कर ही सकते हो भाई। एक लाइक कर दो यार, भाई के लिए एक लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो कैसा लग रहा है, सब्सक्राइब तो कर ही दो यार। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा लाइव गेम लीडर बोर्ड। अभी देखते हैं कोई एक दूसरे से अगर स्वैप करता है तो कौन। चार्ली और डेविड 51 54। ओह, एलिस एंड चार्ली दे आर competing, जस्ट एलिस इज लीड बाय 1 नंबर। ओ नो, कुछ तो। ओह, चार्ली ने हिट कर दिया भाई, 63 हो गया है, ही इज़ ऑन सेकंड पोजीशन नाउ। सो गाइज ये आपका एक्चुअल बैकएंड था जो कि बिल्ड हमने किया है। यूआई मैं नहीं लिखता हूँ और मेरे को पसंद नहीं है यूआई लिखना, बट बैकएंड हमारा ये था। मैं इसको स्टॉप करूँ यार, बहुत सारे रिसोर्सेज खा रहा है ये मेरे, इतना हैवी कॉन्फ़िगरेशन का तो भैया सिस्टम भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो एक बार जस्ट अ क्विक रिकैप। सबसे पहले हमने बनाया था इंजन, नहीं स्टोर बनाया था सबसे पहले। ठीक है, स्टोर में हमने कुछ चीज़ें ऐड करी। ठीक है, बच्चा रो रहा है या बंदरों की आवाज़ आ रही है? पता नहीं भाई, 3-8 हो रहे हैं रात के, मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, चलो छोड़ो। लीडर बोर्ड का स्कोर चाहिए था हमें, ये एक्टिविटीज़ हैं हमारे, प्लेयर ऐड करना था, प्लेयर का स्कोर अपडेट करना था। ये जो था ना, ये सबसे हैपनिंग चीज़ थी, इवेंट। अब यहाँ पे क्या होगा लेटर ऑन, अभी हमने इन मेमोरी यूज़ किया है, हम रेडिस यूज़ कर लेंगे प्रोडक्शन लेवल में, और इवेंट्स की जगह हम पब सब पे घुस जाएंगे। वहाँ पे कुछ तो चल रहा है भैया बाहर। ठीक है, तो काफ्का यूज़ कर लेंगे उसकी जगह हम, या चैनल्स यूज़ कर लेंगे लेटर ऑन प्रोडक्शन पे। ठीक है, और अब उसके बाद
इंजन ऑल्दो मैं सारा कोड अटैच करने वाला हूँ, फिर हमारा कनेक्शन मैनेजर था, हैंडलर था. अब now a lot of you might get question like, don't we need database here? So a lot of you might get question here like, don't we need any database here? So my answer is no, not yet. We do not require any database yet, because DB will add the latency and the complexity. See, what we are doing, our scores are ephemeral, and our real time data we are working on, we are just pushing the real time updates. It's much more makes sense than the historical. When we are working with historical, like when we need recovery, we need scaling, we are with the different instances and all those, like if the server crashes and if a user like network breaks, he have to resume like where he left. On those scenarios we need, but sorry, but in in those as well we cannot directly just put everything inside database because it's a real time. Cool. So we may add like their Redis and other things, but database is not a default choice. It's like when you need like I want the top 20 winners from the last game, or the last 10 games were listed there. Like on certain time you can sync with the DB, but only the historical data, not your real time data. Okay, so in this video, like we didn't start with like Redis or the channels or the SignalR or the Kafka. We just started with the fundamentals, hosted service, in memory, like your in memory state, and hosted services, and we build the entire leaderboard, game leaderboard. And now see, we have just put the initial things in a correct manner. There is no tight coupling, like your WebSocket is totally different. Like there are two component, one is engine, one is store. And now engine is game engine, store is managing the user activities. And if tomorrow we wanna scale, we may go with the Redis, we like in memory instead of, we can go with the Kafka pub, like consumer doesn't know about the producers and all those. So yeah, so that's all for this video. I hope you found this video helpful or useful. So if you found that, hit the like button, subscribe for such content, and share it with your friends. And I think it's the longest video of my channel. Like देखो यार, जो भी है मतलब बहुत बड़ी वीडियो बनी है. सो एटलीस्ट थोड़ा सा प्यार, एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर ही सकते हो आप. ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. सी यू.